Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great. Hope all of you are hale and hearty. In this video, I am back with the Let Us Learn series part 3, in which the series that I recently started, in which I am covering up the methods of string objects of Python. Fine, so let's see what we are going to learn in part 3. In part 3, we are going to learn these two functions, starts with and ends with. Fine, starts with and ends with. With is common, the first word is changing here. It starts and the next word is ends. They are related functions, and that's why I've taken them together for the sake of this video. Fine, so let's quickly see what starts with does. Fine, starts with क्या कहता है बेटा? स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू होना, है ना? स्टार्ट्स का मतलब शुरुआत होना. फाइन, सो एक एग्जांपल देखो. अगर सपोज मैंने कहा डज पाइथन बिगिन विद पी, हाँ, यहाँ पे फोकस करना. डज पाइथन बिगिन विद पी. What will be your answer? Now I'm asking capital P. Does this string Python in uppercase, does it begin with capital letter P? What will be your answer? You will say yes. So Python उसको क्या बोलेगा? Python is going to return true. Fine, because Python has two Boolean constants, true and false. So Python will return true. इसे हमने बोला Python को हमने P से जब चेक किया बच्चे, इस चीज को we called prefix. We call this prefix. Fine. कि string की शुरुआत जो है इस character से होती है. You can even go ahead. You can ask, does Python begin with py? Fine, so वो भी आपका आंसर ट्रू होगा, but this matching would be case sensitive. Fine, so cap इस string की बात कर रहे हो, if you're talking about this string, you have to check. You will get true only if you're going to check that does this string begin with capital Py. So, and if it doesn't begin, like suppose you ask, does Python begin with capital Y? So your answer would be false. Fine, so this is what starts with that. Does it checks prefix मतलब the string की शुरुआत से आप देखोगे एक string की beginning characters जो आप starts with के साथ use कर रहे हो, अगर string उनसे start होती है, Python is going to return true, otherwise Python is going to return false. Fine, so let's quickly dive into the syntax of starts with one by one. Let's begin. So starts with में सबसे पहले बेटा आता है इसका जो syntax है, that is starts str. Here I've written str. This can be any string object, so I'll dissect it part by part. It's like str dot starts with, then in round brackets like that follow the function name. Even if there are no arguments, there are three arguments that you can mention: prefix, then start index and end index. Fine, so in this is, whenever you mention in a syntax, whenever anything is mentioned inside square brackets, so that means that part of this usage, you can be skipped. Like you can skip these arguments, start and end, they're optional. Always remember, it's a universal convention that whenever in a syntax anything is given inside square brackets, it indicates that they are optional. Like they will be having some kind of a default value depending upon what type of arguments are allowed for start and end. These are indexed, so they'll have certain default values, so that when you do not use them, the starts with will work with those default values, and when you provide them, starts with is going to work with the provided values. But giving the prefix is mandatory. So let's see what does everything mean. Like str over here is the invoking string object. You can store string in a variable, like you can make a variable refer to a string, or you can use the string directly enclosed in quotes with the function. किस string को आप के लिए आप str को चेक मतलब starts with को काम करा रहे हो, starts with को कौन सी string में चेक करना है वो आप दोगे यहाँ पर, ठीक है ना. Then next would be like prefix, which is mandatory. This parameter prefix, it is mandatory and it is the prefix to be checked. मतलब beginning आपको जो check करनी है क्या string, ये जो string है इस चीज से begin होती है, prefix से begin होती है, तो prefix देना is mandatory. It has to be a string. Okay, that has to be a string. Fine. Then next is start, which is an optional argument. So that is the beginning position, that is the beginning index position from where you're going to check the prefix within the string. By default यहाँ string की जो checking होती है, prefix की जो checking होती है बेटा वो beginning से होती है, that is from zero index. ठीक है ना, checking begins from beginning. लेकिन अगर आप किसी और जगह से चेक करना चाहो, ठीक है ना, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट्स विद को वर्क कराना चाहो, देन यू कैन मेंशन द इंडेक्स ओवर हियर. इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू व्हेन आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. सेम फॉर एंड. एंड इज आल्सो एन ऑप्शनल आर्गुमेंट. यू कैन बाउंड कि आप एक स्ट्रिंग के अंदर एक बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मुझे इस बिगिनिंग पोजीशन से इस एंडिंग पोजीशन के अंदर जो स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी है, इज इट स्टार्टिंग विद दिस प्रीफिक्स.
फाइन. सो आप इंडेक्स भी मार्क कर सकते हो. बाई डिफॉल्ट ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है ना. एंड तक चेक करता है अगर आप कुछ नहीं देते. बट एक बात ध्यान रखना कि एंडिंग पोजिशन जो है, जो एंड वैल्यू है, सपोज आपने लिखा पाइथन डॉट स्टार्ट्स विद पी 2,5, सपोज आपने लिखा, सो 5 एक्सक्लूड होगा. फाइन ना. 2,5 अगर आप लिखते हो यहाँ पर इस तरह से, स्टार्ट की वैल्यू 2 देते हो और एंड की वैल्यू बच्चे आप 5 देते हो. इफ यू गिव लाइक दिस, सो द स्ट्रिंग दैट विल बी डिफाइंड फॉर यू विल बी index 2, 3, 4. That means this end value will be excluded. Fine. It happens in most of the Python, even in range it works in the same manner, that last this thing, this -1, the string that is going to be formed for you, है ना, तो वो दैट विल बी चेक्ड इन दिस विंडो, लाइक 2, 3, 4, 5 -1. सो स्टॉप -1 पर एंड -1 तक आपका चेकिंग होगा. फाइन. सो लेट्स मूव टू सम एग्जाम्पल्स नाउ. लेट्स ट्राई आउट सर्टेन एग्जाम्पल्स, beginning initial examples on our Python IDLE. This is where I've opened it, and now I'm going to define a string like which is like going to be Python is fun. Fine, I'm defining the string. Let's check s stores this. एक बात ध्यान रखना बच्चे कि when you are using this function at the prompt, आप print use नहीं करोगे because skip कर सकते हो because prompt is already in REPL. Print is incorporated there. But if you're using these two functions in a script, then either store the returned boolean value in a variable or you can use print to show that value. Fine. So let's begin quickly with s dot. अगर आप wait करते हो यहाँ लगा के, तो you know all these 47 functions are going to open up for you. Let me quickly type it. It starts with, and see here it's mentioning, see the syntax that I showed you, starts with prefix, start, end, and the return value is a boolean value. Bool, true or false would be returned. Fine. So like I'll only give the mandatory prefix parameter over here. I'll write p in quotation marks and see the output that I'm getting over here is true. So s starts with capital P, it is going to return me true. Had I mentioned small p bacha, because this matching is case sensitive, I would have got the answer false. So you remember that these functions, they are case sensitive. Fine. And let's take up another, like you can even check more than one character to be the prefix, like py. So the answer is true because the string begins with py. Fine. Next, let's check pytho. So pytho, that is also true, like pytho. This is the prefix. मतलब शुरुआत से दिखेगा, है ना, और end तक check करेगा. Fine. Let's give something that you know the string does not begin with. Suppose I say it begins with y. So my answer is going to be false. Fine, my answer is going to be false. And I can even put the whole string over here, like I can even mention like Python is fun, or I can write like s begins with s. Of course the whole string is, अगर आप पूरी string दे देते हो यहाँ पर, suppose you give the whole string, obviously तो वो पूरी string से ही वो string begin हो रही है, then too the answer would be true. Okay, so this is how, this is when we are only making use of the prefix parameter. Fine. Now let's take some examples where we are going to be using where we are going to use the other two arguments also, like start as well as end. So for that I'll take you back to my slide and I'll show you these examples. We'll solve them right over here, and let's see how this window is going to be framed for us, and what will be the answers. Fine. So let's check. S, this is the string that I have written over here, Python is fun. Okay, and here I've put the index positions. Fine, 0 to 12. ठीक है ना, beginning index is 0 and the last index is 12. So total string length must be 13. Fine, let's check this one. S dot starts with yt, 1. Fine. So अब यहाँ पर this 1 denotes start index. Now you pick up from starting index 1. ठीक है ना, and if you don't mention end, it is going to check till end. So this is going to be like yt से लेकर it is going to check till the end, यानी 1,13 तक चेकिंग होगी, लास्ट मतलब लेंथ तक, है ना. तो 12 आ जाएगा, 13 minus 1 12, so it's going to check till end. Now you check one index वाली जो string है, is it beginning with yt? One index से जो string start होता है, the string that is starting from one index, is it beginning with yt? Case sensitive small yt. That's beginning with yt, so the answer would be true. You will get, what will be the answer that you're going to get? True.
Fine. Let's move to the next example. So we can now here have use start as well as end. Fine. Start as well as end. This is end. So let's first see what this is going to be. This is going to be YT को search करेगा ये 1 और 2 तक because 3 minus 1 पर it is going to be stopping. 3 minus 1 2 पर it is going to stop. So 1 और 2 positions पर 1 और 2 positions पर जो string है, does it begin with YT? जैसे मैंने आपको बताया था Python is fun begins with Python is fun, that would be true. So this is also going to be true. Fine. Now next, if you write like this, Python s dot starts with YT, 1, 2. YT, 1, 2. So this is जैसे ये था 1 से लेकर 2 तक में चेकिंग होना था ना बच्चे. So this is going to be checked from 1 to 1 because 2 minus 1 would be 1. 1, 1. This is how it is going to be evaluated. So 1, 1 पर what am I getting? I'm not like my string is not 1, 1 पर what am I getting? Y है ना. So does my string जो मेरी S है क्या वो YT से शुरू होता है? नहीं. इस इंडेक्स पोजीशन पर जो स्ट्रिंग बनता है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है 1 से 1 तक, does this string, this is how 1 से 1 तक जो स्ट्रिंग बनता है, does it begin with YT? No, it only has one character in it, that is Y. So the answer over here would be false. Fine. अब हमने देखा S dot starts with 1, 1. ठीक. YT 1, 1. अगर आप यहाँ Y भी देते ना, तो मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ. अगर आप यहाँ पर y भी देते सपोज, ठीक है ना, देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर s डॉट स्टार्ट्स विद y 1, 2 अगर आप देखोगे तो ये तो ट्रू आएगा बच्चे, क्योंकि 1 पर स्टार्ट हो रहा है ना, ये रहा 1 इंडेक्स. 1 से 2 का मतलब 1 से 1 पर ही रुकोगे आप, 2 का मतलब आप 1 पर रुकोगे. सो दिस इज स्टार्टिंग विद y only, small y only, the answer would be true. But if you are going to like use same values for start as well as end, so that's going to give us an empty string. हमें कोई string नहीं मिलेगा. So that is why हमारे को जो आंसर मिलेगा बच्चा वो क्या मिलेगा? False. 1, 1 minus 1 तो obviously 0 हो जाएगा, तो वो कोई string की formation ही नहीं हो रहा, ठीक है ना. So that is going to give us false. So this is what like, and if you check like YT 1, 1, obviously YT is already 2 characters, prefixes of 2 characters, and here the string is not getting formed. Fine. So the answer would be false. Okay. Now let's move slightly ahead. Does s dot starts with is, 7 true or false? Let's check. So 7th index पर पहुंचते हैं बच्चे. Here is the 7th index. Fine. And if I'm not mentioning end, then I'll be checking till the end. Fine. So I'm checking till here. So does the string in this setup is fun? Is it starting with this? Yes, this string. This is, we extracted a portion of string using these index positions. So the beginning position for checking up of prefix would be 7. And the string at 7th index, is it starting with is? Yes, of course it's starting with this. Case sensitive bhi hai. So the answer would be true. Fine. Now let's move ahead slightly and check for s dot starts with fun, 10. So fun 10th index पर let's move. We move to the 10th index. Okay, this is the 10th index, and we are not mentioning this first. This is obviously going to act as start. I have skipped end, so it's going to check till end. So जो मेरी end के 3 characters की string बची है this much. This is fun है ना, ये तो fun है. 10th index से जो मुझे string मिल रही है end तक, that is fun. और हम चेक क्या करें? कैपिटल F को. फाइन. सो दिस कैपिटल F is not going to match with, this is not going to match with small f. So as it is case sensitive, no doubt it's starting with fun, but the F given over here is in uppercase, whereas the F in the string at 10th index is in lowercase. So this, due to this case sensitivity, the answer is false. Fine. Next, s dot starts with fun, 10, 20. Now see, I have exceeded the value for n. एंड पैरामीटर. एंड पैरामीटर अगर आप एक्सीड कर जाते हो स्ट्रिंग लेंथ से तो कोई एरर नहीं आएगा. स्टार्टिंग पैरामीटर आपका ठीक है, दैट 10th इंडेक्स. फाइन. 10th इंडेक्स से जो स्ट्रिंग है, डज इट, अब आपने एक्सीड कर दिया 20, सो इट्स गोइंग टू ignore that, it's going to check till the end. Fine. So 10th index से जो string है, does it begin with fun, fun, small fun? The answer would be true. Fine. So अगर आप index upper bound cross भी कर देते हो, just in case you cross the upper bound, no need to worry, you're going to get the answer as true. Fine. So this was about starts with. I hope it's clear to all of you now. Let's begin with ends with now. So ends with is just the opposite of starts with. अगर आपको starts with अच्छे से clear हो गया है,
इस एक्सप्लेनेशन से। तो एंड्स विद आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको मतलब आपको मेरे बिना बताए भी शायद समझ पे आ जाएगा, ठीक। सो द एंड्स विद मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग एंड्स विद अ स्पेसिफाइड सफिक्स। नाउ एंड्स विद का मतलब क्या होता है, क्या ये एंड होता है एक सफिक्स। जो बिगनिंग से देखे वो प्रीफिक्स थे बेटा, और एंड से जो देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सफिक्स। सो अगर मैं कहूँ पाइथन कैपिटल PYTHON डज इट एंड विद कैपिटल N, आंसर वुड बी ट्रू। बट इफ आई से इट एंड्स विद स्मॉल n, आंसर वुड बी फॉल्स क्योंकि केस सेंसिटिव आ जाएगा। इफ आई से इट स्टार्ट्स विद ऑन, सॉरी इट एंड्स विद ऑन, आई थिंक मैंने स्टार्ट्स विद ना बोला हो। डज पाइथन एंड विद n, ट्रू कैपिटल N। डज पाइथन एंड विद स्मॉल n दिस स्ट्रिंग, no, false. Does Python ends with capital ON? True. Fine. Does Python ends with small on? False. So this is suffix. It's going to check from the end. Does the string end with a given suffix? If it ends, the answer would be true. If it does not end, the answer would be false. Fine. So let's see its syntax. There's just a small change in the syntax, children. That again, the syntax will be the same. Start and end are optional arguments. Suffix is mandatory, and your str, the string object with which you are going to invoke, है ना। जैसे अभी आपने s से इन्वोक किया इन एग्जाम्पल्स में, s में आपने रेफर करा रखा था पाइथन इज वन स्ट्रिंग को, इन्वोकिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। देन सफिक्स विच इज मैंडेटरी, है ना, सफिक्स इज मैंडेटरी विच इज टू बी चेक्ड कि स्ट्रिंग किससे एंड होता है, वो सफिक्स आप मेंशन करते हो एज अ स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। देन स्टार्ट इज ऑप्शनल, कहाँ से आपको चेक करना है, मतलब स्ट्रिंग की बाउंड्रीज को अगर आपको डिफाइन करना है, आई डोंट वांट टू चेक फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वांट टू चेक फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक। दिस इज ऑप्शनल। नेक्स्ट इज एंड, अगेन एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स, सो एंडिंग पोजीशन, कहाँ तक आपको सफिक्स को चेक करना है, ठीक। अगेन द एंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। सो आई होप आप रिलेट कर गए होगे इसे स्टार्ट्स विद से। स्टार्ट्स विद यूज्ड टू चेक फॉर प्रीफिक्स, एंड्स विद is going to check for suffix. Fine. So let's quickly take up some examples again, and I will be like putting down the same string here. ये आ चुकी है हमारी string Python is fun, and now we will check s dot, और वेट करो तो आपको पता है ends with तो आपको शुरू में यही मिल जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। So ends with अगर आपने लिखा small n, so you're going to get true. Fine. अगर आपने लिखा ends with capital N, तो you're going to get false because n से तो एंड हो रहा है ना, स्मॉल n से, लेकिन कैपिटल N से नहीं हो रहा, केस सेंसिटिविटी है बच्चा, ठीक है ना। देन सपोज यू नाउ यू वांट टू चेक कि क्या ये फन से एंड होता है, ऑब्वियसली ट्रू, फन से एंड हो रहा है, लास्ट में सफिक्स है फन, ठीक है ना। अच्छा, फिर यू कैन चेक विद द होल थिंग अगेन, लाइक इफ इट इज एंडिंग विद, एक स्पेस दे दो यहाँ पर, इज इट एंडिंग विद दैट, यस स्पेस फन, इट्स गोइंग टू बी ट्रू क्योंकि स्पेस फन से वो एंड हो रहा है ना। इफ इज इट एंडिंग विद, स्पेस से पहले आप यहाँ पर एक इज लगा दो बच्चे, ठीक, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। फाइन। तो क्योंकि इज फन से ये एंड हो रहा है, अब ये जो चेकिंग हो रहा है शुरू से हो रहा है ना, बिगनिंग से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक। फाइन। अगर अब आप यहाँ पर पूरी ही स्ट्रिंग दे दो, लाइक यू गिव पाइथन इज फन, सो ऑब्वियसली स्ट्रिंग शुरू भी खुद से ही होती है और एंड भी खुद से ही होती है, सो द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद इटसेल्फ एंड इट एंड्स विद इटसेल्फ, सो द आंसर वुड बी ट्रू। फाइन। सो अब सपोज आपने यहाँ लिखा होता पाइथन डॉट एंड्स विद फन, तो आपका ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। या आपने गलती से, मतलब आपने चेक करने के लिए गलती से क्यों लिखेंगे, हम चेक करते हैं क्या ये पी से एंड होता है, फॉल्स, क्योंकि पी से तो ये शुरू हो रहा था। एंडिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग का क्या है, दैट इज एंड। फाइन। सो दिस इज लाइक, अगर हम सफिक्स की बात करें, दीज आर द एग्जांपल्स, एंड वंस अगेन आई टेक यू टू द स्लाइड वेयर आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स, वी आर गोइंग टू वर्क देम आउट राइट हियर विद द सेम स्ट्रिंग, ओनली द फंक्शन इज चेंज, सो द मीनिंग ऑब्वियसली वुड बी डिफरेंट। सो एस डॉट एंड्स विद, अब इन एग्जाम्पल्स में ना आई एम गोइंग टू बी मेकिंग यूज ऑफ द स्टार्ट एंड एंड पैरम आर्ग्यूमेंट। सो एस डॉट एंड एन फ्रॉम टू। फाइन। सो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है बेटा, ठीक है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स आपने डिफाइन कर दिया टू से अगर आपने एंड नहीं दिया, सो इट इज गोइंग टू चेक टिल एंड। सो सेकेंड इंडेक्स से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वो एंड तक चेक होगी, क्या वो एंड से एंड होती है, बिल्कुल एंड होती है, सो द आंसर वुड बी ट्रू। ओके, नाउ लेट्स कन्फाइन, अब थोड़ा सा कन्फाइन करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, वी राइट 2,6। सो ये चेकिंग जो होगी 2 to 5 के बीच में होगी, 5 6 - 1 5, सो 2 to 5 की स्ट्रिंग आप डिफाइन कर लो यहाँ से, ठीक है। 2,6 मीन्स यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस रेंज, 2 3 4 5, ये विंडो बन जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या आ रही है, इस
एंड पर THON ये स्ट्रिंग निकल के आ रही है बच्चे। अब चेक करो क्या ये जो स्ट्रिंग आपने एक्सट्रैक्ट करा है इज इट एंडिंग विद n? यस ऑफ कोर्स इट इज एंडिंग विद स्मॉल n, तो आंसर वुड बी ट्रू। फाइन, नेक्स्ट n 2,5। फाइन, सो 2,5 का मतलब यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बट एंडिंग एट 4। फाइन, सो अब आप देखो उसको डिफाइन करो 2 3 4, द स्ट्रिंग दैट वुड कम आउट वुड बी THO, ठीक है ना, THO। So is it ending with n? No. So the answer would be false. So you have to remember one thing that end तक नहीं check होता, n-1 तक checking is it takes place. Now let's define the string. S dot ends with S1, 9. 1, 9 means you are going to extract from 1 to 8. लिख लेते हैं यहाँ पर 1 to 8 क्या आ रहा है बच्चे? YTHON space is IS है ना, ये आ गया 1,8। यहाँ से देखो आप 1,8 तक ये स्ट्रिंग आ गई, ठीक। सो इज इट एंडिंग विद S? इज द स्ट्रिंग एंडिंग विद S? यस ऑफ कोर्स इट्स एंडिंग विद S, आउटपुट वुड बी ट्रू। फाइन, नेक्स्ट, डज द स्ट्रिंग ends that is defined by 5,11. 5,11 means 5 to 10. Does the string defined by 5 to 10 ending with does it end with F? So let's define 5 to 10. 5 to 11 means we'll stop at 5 to 10, है ना। So यहाँ पर देखो आप ये string, इसका last character क्या है? F, है ना। तो that is going to also be giving you n is F space F. So this last character is F. This is also going to give you true. Fine. Now next 5,5. 5 पे ही स्टार्ट दे दिया। जब भी स्टार्ट और इंडेक्स the start and end will have the same value, you will not be able to extract any string. फाइन, भले ये 5,6 अगर आप दोगे, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दिया 5,6, 5,6 पर तो हमारी रेंज बन जाएगी बच्चे, है ना। ये 5,6 मीन्स 5 से शुरू हुए 5 पे ही रुक गए, है ना। तो दैट इज लाइक 5,6 पर आई एम गेटिंग दीज टू कैरेक्टर्स लाइक ओवर हियर। सो एन से एंड होता है, ये तो ट्रू आएगा, ठीक ठीक, बट 5,5 पर कोई स्ट्रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। 5,5 5 से शुरू हुई, दैट मीन्स स्टार्ट जो होता है वो और एंड अगर आप सेम रखते हो तो नो सबस्ट्रिंग इज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। स्टार्ट और एंड अगर डिफरेंट होता है तो यू कैन एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग, ठीक है, गिवन बाय दीज इंडेक्स वैल्यूज, एंड देन यू हैव टू चेक दैट एक्सट्रैक्टेड सबस्ट्रिंग इज इट एंडिंग। जैसे यहाँ एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, एन एक्सट्रैक्ट हुआ 5,6 पर, सो ऑब्वियसली इट्स एंडिंग विद एन, सो द आंसर वुड बी ट्रू। Fine. So this is how starts with and ends with they work. I hope you've understood them clearly. And if you've understood them, do give a thumbs up and do leave a motivating comment on the video and share it with your friends. Watch all 3 parts and even the latest code series you can watch. Until we meet again, children, I just want to say one thing. Happy learning, bacha, and may God bless all of you. Take care. Bye bye.